स्टार्टअप्स को वो सभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करी जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी. The best part I love about this job is that I get to make sure that every business we support is eligible to be a part of our formal economy, and that makes our nation the Atmanirbhar Bharat. Hi, this is Gaurang, and I take care of the finance department at StartupFlora. For the past 1 year, my role has been simple: to give the right direction to the right business, whether it's a government grant or private investor. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एलिजिबल बिजनेस को उसकी ग्रोथ के लिए फंडिंग मिल पाए. बेस्ट थिंग आई लव अबाउट दिस जॉब इज व्हेन अ फाउंडर कॉल्स बैक टू से गौरव जी फंडिंग मिल गई है, नाउ वी कैन बिल्ड द आत्मनिर्भर भारत. Hi, this is Dipesh, and I take care of the operations department at StartupFlora. For the past 1 year, my team and I have guided thousands of businesses to become documentation ready and compliance friendly, from GST to OTM, from certificate to pitch decks. हमने सभी एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वो सभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करी जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी. The best part I love about this job is that I get to make sure that every business we support is eligible to be a part of our formal economy, and that makes our nation the Atmanirbhar Bharat. Hi, this is Gaurang, and I take care of the finance department at StartupFlora. For the past 1 year, my role has been simple: to give the right direction to the right business, whether it's a government grant or private investor. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एलिजिबल बिजनेस को उसकी ग्रोथ के लिए फंडिंग मिल पाए. बेस्ट थिंग आई लव अबाउट दिस जॉब इज व्हेन अ फाउंडर कॉल्स बैक टू से गौरव जी फंडिंग मिल गई है, नाउ वी कैन बिल्ड द आत्मनिर्भर भारत. Hi, this is Dipesh, and I take care of the operations department at StartupFlora. For the past 1 year, my team and I have guided thousands of businesses to become documentation ready and compliance friendly, from GST to OTM, from certificate to pitch decks. हमने सभी एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वो सभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करी जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी. The best part I love about this job is that I get to make sure that every business we support is eligible to be a part of our formal economy, and that makes our nation the Atmanirbhar Bharat. Hi, this is Gaurang, and I take care of the finance department at StartupFlora. For the past 1 year, my role has been simple: to give the right direction to the right business, whether it's a government grant or private investor. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एलिजिबल बिजनेस को उसकी ग्रोथ के लिए फंडिंग मिल पाए. बेस्ट थिंग आई लव अबाउट दिस जॉब इज व्हेन अ फाउंडर कॉल्स बैक टू से गौरव जी फंडिंग मिल गई है, नाउ वी कैन बिल्ड द आत्मनिर्भर भारत. India Hi, has this the is Dipesh, potential and to I take emerge care of the as a operations global department hub for at high StartupFlora. For quality, the past 1 year, affordable my sports team and I goods. have guided thousands I of propose businesses a to become dedicated documentation initiative ready and for compliance sports friendly, goods from GST that to will promote OTM, certificate to manufacturing, pitch research, decks. हमने and सभी एमएसएमई innovation और in स्टार्टअप्स को वो equipment सभी design डॉक्यूमेंटेशन के लिए as गाइडेंस well as प्रोवाइड करी जो material उनकी ग्रोथ sciences. के लिए बहुत जरूरी. The best part I love about this job is that I get to make Rejuvenation sure of that every legacy business we industrial support is clusters. eligible to be a I part of our propose to formal introduce a economy, scheme and to that makes our revive nation the 200 Atmanirbhar Bharat. legacy industrial clusters Hi, to this is improve Gaurang, their cost and I take care of the competitiveness finance department and at efficiency For the past through 1 year, my role has been infrastructure simple: and to give the technology right direction to the right upgradation. business, whether it's a government grant or private investor. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर Creating एलिजिबल बिजनेस को champion उसकी ग्रोथ के लिए फंडिंग मिल SMEs पाए. बेस्ट and थिंग आई लव supporting अबाउट दिस micro जॉब इज व्हेन अ फाउंडर कॉल्स बैक टू enterprises. से गौरव जी फंडिंग मिल Recognizing गई है, नाउ वी कैन बिल्ड MSMEs द as a आत्मनिर्भर भारत. vital engine of growth, I propose a Hi, three-pronged this is approach Dipesh, and I to take let care of them the grow operations as department at champions. StartupFlora. For the past 1 year, my Equity team support. and I have I guided propose thousands to of introduce businesses a to become dedicated documentation ready and 10,000 compliance crores friendly, from GST to SME OTM, growth certificate to pitch decks. to हमने सभी create एमएसएमई और future स्टार्टअप्स को वो champions, सभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करी incentivizing जो उनकी ग्रोथ के enterprises, लिए बहुत enterprises जरूरी. based The on best part I love about this select job is that I get to criteria. make sure that every business I we also support propose is to eligible top to up the be a part of our self-reliant formal India economy, and fund that makes our set nation up the in Atmanirbhar Bharat. 2021 with 2,000 crores And I take care of continuous the finance support to department at micro StartupFlora. For the enterprises past 1 year, and my role has maintain been their simple: access to to give the risk right direction to the capital. right business, whether it's a government Liquidity or support. मेरी With रिस्पॉन्सिबिलिटी threats, होती है कि हर more एलिजिबल than बिजनेस को 7 उसकी lakh ग्रोथ के लिए crore फंडिंग has मिल been पाए. made बेस्ट available थिंग to आई लव अबाउट दिस SMEs. जॉब इज व्हेन अ फाउंडर कॉल्स To बैक टू से leverage its गौरव full जी फंडिंग मिल गई potential, है, नाउ वी कैन I propose 4 measures. 1. Hi, Mandate this is Threads as a Dipesh, and I transaction take care of the settlement operations platform department at for all StartupFlora. For the past purchases 1 year, from my team and MSMEs I
by CPSEs, become documentation ready and compliant, serving as a benchmark for other certificate corporates. which takes 2. सभी MSME Introduce startups को a सभी credit guarantee documentation support guidance provide mechanism करेगी उनकी through CGTMSE for invoice best part I love discounting about on this job Trace is that I get to platform. make sure 3. every business we support Link Gem is with Trace eligible to for be a part sharing of our information economy. with And that makes our financiers nation the about government Atmanirbhar Bharat. purchases from MSMEs, Hi. encouraging And I take care of the cheaper finance and department at quicker StartupFlora. For financing. the past 1 year, my role has been simple. Introduce To give the right Trace direction to the right receivables as whether it's a government asset-backed grant, securities, मेरी helping रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर develop a एलिजिबल secondary बिजनेस को market, ग्रोथ के लिए फंडिंग मिले। enhancing Best thing I liquidity love about this and job is when settlement I of come back to say transactions. currency funding मिल गई है, now we can build Professional support. Government will facilitate StartupFlora. For the past ICSI, 1 year, my team ICMAI and I have to helped design thousands of businesses short-term become modular documentation ready and courses compliance and ready. practical GST tools to put there, to develop a certificate cadre which of takes सभी corporate MSME startups midterms, को वो सभी especially in documentation Tier 2 and Tier 3 verticals. These accredited para professionals will help MSMEs meet compliance requirements and affordable makes our costs. nation the Atmanirbhar Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as infrastructure investment trust, best thing I in love which about this job is and when I real come estate back to say investment currency trust funding मिल गई है, rates, now we can build and institutions like NIIF and Hi, NAB this is Dipesh, and I take care of the we operations shall continue department to at focus on StartupFlora. For developing the past 1 year, infrastructure my in team and I cities have with guided over thousands of 5 lakh businesses population, become that is Tier documentation 2, ready and Tier 3 compliance ready. cities, GST to go which have expanded certificate to become which growth takes centers. सभी MSME startups को वो सभी documentation Public के लिए capital guidance provide expenditure करेगी जो उनकी growth has के लिए increased बहुत ज़्यादा manifold important थी. from Best 2 part I lakh love crore in about this job is that I get to make 2014-15 sure that to an every business we allocation support of is eligible 11.2 to be a lakh part of crore our common in economy. That makes our nation the 2025-26. Atmanirbhar Bharat. In this coming year, Hi, this is that Gaurav. is And I take care of the finance financial year department at StartupFlora. For the past 1 year, 2026-27, my role I has been simple. propose to increase The it right to direction to the right 12.2 lakh whether it's a crores government grant, to continue the momentum. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एलिजिबल बिजनेस को ग्रोथ के लिए To फंडिंग strengthen the बेस्ट थिंग आई confidence लव of अबाउट दिस private जॉब इज व्हेन developers काउंटर कॉम्स बैक टू से regarding risks now we can during infrastructure development and construction Hi, phase. this is Dipesh, I and I propose to take care set of the up an operations department infrastructure at risk StartupFlora. guarantee For the past fund 1 year, my team to and I provide have guided prudentially thousands of calibrated businesses partial credit guarantee to lenders. Over the years, RIDEs have emerged as a successful instrument of asset monetization and propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated RIDEs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Karimnagar to the ports of Paradip and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes.
A seaplane VTF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We should now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit
which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan, National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities.
They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and collaborative and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism.
The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Pudigai Malay in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Doravira, Rakhi Gadi, Adichanadu, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to the small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices.
C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya estates and the northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, other trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan.
Divyangjan Kaushal Yojana, information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana, timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALINCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Phase 4 as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and program pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you allowed me to do at the commencement of the session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this,
The debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27 compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this August House that I have fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates, non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker said, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme
for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with a payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize
operationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement (APA), I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics
for electronic manufacturing. I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tender leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers
accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions or items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take Just a moment, sir. मेरे पास तो जिनके साथ में फॉलो करने के लिए कर दिया उसको सिंपलीफाइड चीज़ का सब जगह को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिए इन्होंने ऐसे कोई चेंज नहीं किया मेजर चेंज नहीं करा इन्होंने अभी कोई बस माइनर में ही है करेक्शन करें और भाई इंडिविजुअल को तो फर्क पड़ना नहीं है रिटर्न दो कर दी और ये के लिए काम पूरा है नहीं ठीक है सर जुलाई 31 अगस्त और सितंबर है अक्टूबर है 4 महीने तो कम से कम ठीक है मतलब ये ठीक भी है पहले क्या सब लोग एक जगह अब बाइफिकेशन हो जाएगा तो ये भी चल रही है क्यों ऑडिट में 2 महीने मिलते थे मैं निकलता था 2 महीने में अब एक ही महीने मिलेगा अपने garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes
will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advanced ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products accounting for about 70% of interdicted cargo will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology
for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. श्री माननीय वित्त मंत्री जी लास्ट वाला कह रहा था ना ये कि ईमानदार कर देता आपको कस्टम्स के अंदर कस्टम्स में कराया ना उन्होंने ईमानदार जो एक्सेल बाहर आते हैं जाते हैं उनको डिक्लेयर करके जाना पड़ेगा वहां पे फाइनेंस टैक्स लगता है उसको अब उन्होंने टैक्स में दे दिया तो दिस दी अगेन ये जो भी वो तो ये जो इन्होंने देखो सबसे अच्छी बात तो क्या है जो पर्सनल यूज वाला जो मामला था ना पेनल्टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो कोर्ट कचहरी की वो तो ठीक है वो जो पर्सनल ड्यूटी का हटाया ना उन्होंने जैसे 20% से 10% कर दिया बेसिक कस्टम ड्यूटी उससे बहुत ज्यादा फायदा हो गया क्योंकि पहले सब ये प्लान करते थे कि 20% है क्या करें क्या नहीं करें अभी सब पे कर दिया हमारे उसकी मॉनिटरी लिमिट उसको रिव्यू कराएगी नहीं करा वो नहीं करा भी इन्होंने स्टार्टिंग से बजट से मैडम ने ग्रोथ का बजट दिया कई सिस्टम सेटअप किए हैं कई बोर्ड बनाए हैं कई मतलब जैसे नेशनल हैंडलूम्स के बनाए हैं टेक्सटाइल के बनाए हैं कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंडिंग दी तो ऑल दीज आर जस्ट लाइक की जैसे बायोफार्मा शक्ति जो है वो सब तो दिया है इससे ये आया कि एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक कैपिटल एक्सपेंशन पे ज्यादा जाना चाह रहे हैं जिस हिसाब से दिख रहा है ना कैपिटल एक्सपेंशन बिजनेस को सपोर्ट करना और टूरिज्म वाला जो है ना टूरिज्म वाला बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग एसएमई के लिए इक्विटी सपोर्ट के लिए आया है इंसान फंड दिया है उन्होंने वैसे ट्रेंड कंपलसरी ट्रेड्स कंपलसरी वो सबसे जैम पोर्टल का थ्रू एक्सेस जो दे दिया है इन्होंने अब जैम पोर्टल का जैम पोर्टल में मैं शायद मिस आउट कर दिया जैम पोर्टल में दे दिया और अब इन्होंने क्या करा इनवॉइसिंग को लिंक कर दिया भाई आपकी कोई एमएसएमई का पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा अब वो एक पोर्टल बनाएंगे ये लोग वहां पे अपना क्लेम क्लेम करो कि भाई मैंने ट्रेड से कनेक्ट कर दिया ट्रेड से सारे कनेक्ट कर दिया गवर्नमेंट कंपनीज को अब उनको बताना पड़ेगा पहले भी था ये मामला पर अब 1-to-1 लिंक कर दिया उन्होंने ट्रेड्स में जब यूजुअली जब हम कंसल्ट करते हैं बिजनेस को ट्रेड्स बहुत कम बिजनेसेस तक पहुंचा होता बट जब ट्रेड्स हम मैंडेटरी कर दिया बहुत लोगों तक मैंडेटरी फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट परचेजेस ओके ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट परचेजेस के लिए वहां से आपको करना जरूरी है अब ये कॉर्पोरेट को कैसे
अलाउ करते हैं, नहीं अलाउ करते हैं, क्या बाउंडेशन देते हैं, उस पे देखना पड़ेगा कैसे करते हैं ये मेगा टेक्सटाइल पार्क का अनाउंसमेंट किया है, वो उसके लिए बहुत बढ़िया है। और उसके अलावा कोई स्वर्ण योजना है वीवर्स के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और जैसे ये टियर 2 टियर 3 को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब छोटे शहरों के अंदर अब हर तरीके से ये चाह रहे हैं कि आगे बढ़े वो लोग, उनको कैपेसिटी सब्सिडी दे रहे हैं, रोजगार के लिए दे रहे हैं, जैसे पुराने यात्रा वगैरह के लिए होते हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ थी बैंकिंग रिफॉर्म करने के लिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स और एनएफसी के लिए तैयार कराएंगे। बैंकिंग रिफॉर्म आएगा तो अभी जो बैंक है वो थोड़ी सी एक तरह से स्टैंड स्टिल हो चुके हैं, सही बात है। तो नई चीजें लाएंगे, नया रिफॉर्म्स लेके आएंगे ताकि वो बैंक आपके मॉडर्नाइज हो। टेक्नोलॉजी आज पीएसयूज है वो मॉडर्नाइज नहीं है, प्राइवेट बैंक्स मॉडर्नाइज हो रहे पर उनके पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास फंड की पॉसिबिलिटी हो तो मॉडर्नाइज कर पाए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कैसे लाएं। और फ्रेमवर्क को भी ये कह रहे हैं कि इसको जो डेब्ट वाला मामला है उसको वो रिव्यू करेंगे, इसके अंदर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, म्युनिसिपल बॉन्ड है, वो इशू करेंगे ताकि शहरों के पास में पैसा और ज्यादा है, वो इन्होंने एक अच्छा कर दिया। और ये मुझे लगता है कि पिछले 2-3 बजट का हम बहुत समय के बाद हम लोगों को पता लगा डेफिसिट में थे भी नहीं तो नहीं, अभी तक तो 4.4 और 4.5 तक लेके जाने के लिए कह रहे हैं ये लोग। और अब एनआरआई को जैसे इन्होंने अलाउ कर दिया कि पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पहले के थ्रू भी पहले टिपिकल थी चीजें, अब उन्होंने एक सिंपल रास्ता निकाल दिया, इसके थ्रू आप एनआरआई को इन्वेस्टमेंट कराओ ताकि फॉरेन सबसे बड़े एक और चीज करी एलआरआई के थ्रू जो पेमेंट करते थे बाहर, जिसमें टीडीएस करता था, टूरिज्म का, एजुकेशन का, मेडिकल का, वो उन्होंने जो 5 या 20% कुछ ऐसे ही था उसको घटा के 20% था, उसको 5% बहुत सिंपलीफाई कर दिया इन्होंने। एक्चुअली मेरे को एजुकेशन करने के लिए मेरे बेटे को बाहर भेजना है, तो आज 10 लाख की फीस है, 20 लाख की फीस है, उस पर टीसीएस लगता था, जो 20% जो कि एलआरएस के थ्रू था, मेरे को एडिशनल गवर्नमेंट को और जमा कराना पड़ता था। ओके 20 लाख प्लस 4 लाख और लग गया तो 24 लाख की कॉस्ट हो गई। एक्चुअल वो कॉस्ट अब एक्चुअल में तो टैक्स तो है ही नहीं, मेरा 4 लाख तो रिफंड लेना है मेरे को। सही बात है। अब वो बात अब आपने 2% कर दिया उसको लाके, तो 2% करने से मेरी जो एडिशनल कॉस्ट है उसको सिर्फ एक नोटिंग करने के लिए लेना था एलआरएस के अंदर कि आप ओवरसीज पेमेंट कर रहे हो। ओके अब बट टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फॉर द पर्पस ऑफ ओनली नोटिंग में डाला गया था, बट अब इसको 2% करेंगे तो अच्छा, आदमी के ऊपर एडिशनल कॉस्ट कम हो गई। तो एक्चुअली में नोटिंग चीजों में कर दिया कि दो में था ना, तीन चीज में पहले था। था ये मेडिकल में, अब मेडिकल में आदमी को परेशान है वो वैसे ही, पहले उनको टैक्स टीसीएस दो, फिर वहाँ पे इलाज करने जाओ, आदमी का जब मेडिकल में कंडीशन में होता है तो पैसे को बचा बचा के चलता है, और यहाँ पर उन्होंने टीसीएस लगा रखा था, तो जहाँ 5 लाख रुपए था वहाँ पे 6 लाख रुपए लग रहा था। अब उन्होंने बोला कि ठीक है इसको हम लोग कम करते हैं, अब इसको 2% 5% पे लेके आते हैं। वो एजुकेशन भी था, मेडिकल भी था, टूरिज्म भी था, tourism भी था, टूर पैकेज लीजिए तो टीसीएस कटता था, देना ही देना है। तो अब वो कम कर दिया। ठीक है, अब रिवाइज रिटर्न करने का पहले 31 दिसंबर था डेट, वो 31 मार्च कर दिया, ये बहुत बढ़िया करा इन्होंने। अच्छा, इन्होंने एक चीज जो नोटिंग कराई है कि ये नॉमिनल फीस पे होगा। आज की तारीख में जो नॉमिनल फीस है वो 1000 और 5000 रुपए है एक तरीके से, मगर उसको भी इन्होंने कम करना चाहिए थोड़ा बहुत। अभी कुछ जनों के लिए 5000 रुपए मुश्किल पड़ जाती है चीजें के लिए। और बहुत जगह में प्रोसिक्यूशन को रिड्यूस करा है। अच्छा प्रोसिक्यूशन को कम कर दिया, पेनल्टीज को हटा के फीस में कन्वर्ट कर दिया। कि पेनल्टीज के अंदर प्रॉब्लम ये होती है, पेनल्टीज जब भी लगी होती है तो आपको एक कंपनी को जो आईपीओ के लिए जा रही है तो पेनल्टी के लिए ना डीआरएचपी के अंदर उसको समझना पड़ता है कि मैंने पेनल्टी कहाँ शो करी है, और पेनल्टी इन्वेस्टर्स और जो भी बोर्ड आईपीओ के लिए जाता है तो वहाँ पर नेगेटिव ट्रेड ना आता है। अभी पेनल्टी को हटा के तुमने फीस में कन्वर्ट कर दिया, सीए को भी हटाना, इनकम टैक्स रिटर्न से हटाना पड़ता है कि आपको पेनल्टी दे तो डिसअलाउ, फीस नाउ इट वुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन, डबल टाइम इफेक्ट करता है इसके लिए। एंड प्लस एक और चीज की बात हो रही थी जो प्रोसिक्यूशन भी रिड्यूस की, हाँ, साथ साथ जो अपना लखपति दीदी स्कीम करके जो थी उसके बारे में कुछ बताया कि उसके लिए और इंक्रीज करिए कुछ वुमेन के लिए और स्कीम्स। उन्होंने अब क्या करा, शी मार्ट करके नाम लेके आएंगे लोग। ओके हाँ, एक शी मार्ट लेके आएंगे, जैसे आप उसके अंदर क्या है जो प्रेजेंटेशन करेगी, जो लीड करेगी वो लेडीज करेगी। अभी तो उनको लखपति दीदी कहते थे, अब उनको काम वगैरह भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जैसे पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते थे, अब उनको नाम एक तरह से चेंज करके बेटर वे के अंदर उनको लेके आए शी मार्ट करके, तो वो इन्होंने यहाँ पे काम किया है। अब जैसे एक डिजिटल मीडिया को इन्होंने एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट कर दिया कि ऑरेंज इकोनॉमी बनाएंगे हम लोग एक तरीके से आपके लिए,
अच्छा वो क्रिएटर्स के लिए भी जो बात कर रहे क्रिएटर्स के लिए, डिजिटल क्रिएटर्स के लिए, इसको मुंबई के लिए कह रहे हैं लोग कि अच्छा वहाँ पे उनको Gift के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह वहाँ को project दे देंगे, दिया। हाँ उसको देंगे। और फिर ये क्या कर रहे हैं कि जो पुराने जो लोग थे, पुराना काम देना देखते थे, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं लोग, जो टियर 1 टियर 2 के अंदर लेके हाँ उन्होंने बोला कि 5 लाख से जहाँ पे 5 लाख आबादी जो पॉपुलेशन है हाँ। जिस भी सिटी की, हाँ। तो वहाँ पे अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग और प्रमोट वहाँ करेंगे, infrastructure develop क्योंकि होगा। उनको लग रहा है कि पुरानी विरासत जो है इंडिया की, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है एक तरीके से, वो फॉलो करेंगे। खेलो इंडिया मिशन लेके आ रहे हैं। अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक चीज और मेंशन करी अपने बजट में कि स्टोरी टेलिंग को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। पहले ये लोग नहीं सोचते थे, मतलब कितनी बड़ी स्किल बना दी इन्होंने स्टोरी टेलिंग को, Storytelling। बजट के अंदर नाम लेके आए। Anyway, the government has thought a lot for the project, for the future growth vision. शुरुआत के अंदर से इन्होंने दो हाँ। चीजें बायोफार्मा और केमिकल। हाँ बायोफार्मा का मुझे वो बायोफार्मा का मतलब इसे न्यू बिजनेस पूरा बड़ा 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं इसमें। हाँ। और उसके साथ सेमीकंडक्टर्स के ऊपर अगेन दे डबल Yes। गए के अंदर थर्ड एक 30,000 और करोड़ थे, अब के बाद 40,000 कार्बन क्रेडिट्स में भी कार्बन Carbon credit कार्बन ट्रेडिंग के लिए भी हाँ, दिया। ये इसके अंदर। दीज आर द बेसिक चेंजेस जो कि आपको और बाकी जैसे छोटे हैं वो तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो इंजन चाहिए जो इंजन है, दीज आर द इंजन्स जिनको नए ऐसा वो एक तरह से नया जो डायमेंशन है, डायरेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्स ओवरऑल दिस इज द बजट डायरेक्शन। के अंदर जो डिमांड आती थी पहले 20% जमा कराते थे, तो इसके तब आप आगे फाइट तो कर वो सकते 10% हो गया। ओके, उसको 10% कर दिया। एक वन टाइम फॉरेन ऐसा डिक्लेरेशन स्कीम है, कहीं होते हैं बाहर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेके आ जाते हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, शेयर्स होते हैं, वो हाँ। इंडिया आ जाते हैं और वो डिक्लेयर नहीं कर पाते। और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से जो नोटिफिकेशंस आई हैं खूब नोटिस आए हैं, खूब नोटिस आए ना कि हाँ नोटिस बिल्कुल तो उसके ऊपर लास्ट डेट लगी करो 31 दिसंबर। अब इन्होंने बोला चलो ठीक है, सबको मालूम तो चल गया कि भाई कहीं ना कहीं इशू तो है पुलिस और के पास में, लोगों ने डिक्लेयर नहीं करा। समझ में आया। मेरी अच्छा सिस्टर लिमिट को भी पूछा सही है नोटिस आया कि मेरे खुद के भी कई क्लाइंटों ने हमारे भी आए हैं वो। अब वो अच्छा, शादियों के आ गई, बाहर से शादी हो के आ सही गई, बात है। इंडिया में आ गई, अब वहाँ उसका था वो तो उसने डिक्लेयर नहीं एंड दे मेंशन वेरी क्लियरली कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है हमारे इंटरनेशनल यूएसए का नाम सबसे ज्यादा दिया है तो इन्होंने। लोग घबरा भी बहुत गए उससे। यूएसए के साथ में शायद इनका इंफॉर्मेशन कुछ एक्सचेंज हुआ है अच्छा वाला, सबसे अच्छा तो यूएसए वाला आया है इसके अंदर। एक इन्होंने सबसे बड़ा चोट पहुंचा है क्या शेयर्स के अंदर एसपीटी बढ़ा दिया। हाँ SPT एसटीटी बढ़ा दिया। ऑप्शन प्रीमियम पे बढ़ा दिया इन्होंने। बोला है कि जो फॉरेन मार्केट में जो ई-कॉमर्स आप बिजनेस कर रहे हो उसमें हेल्प करेंगे, तो वो किस तरीके से वो होगा पूरा? तो इनको फाइनल पॉइंट पढ़ना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। बट मेजरली जैसे अभी उन्होंने सेल्फ रिलायंट फंड निकाला है, जो चीजें हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर हो सकती है, तो सर्विस भी आउटसोर्स हो सकता है, तो अल्टीमेटली उसके लिए पॉलिसीज थोड़ी ईज करी हैं ताकि जो हम एक्सपोर्ट करें वो बेटर करें। और हमारे पास जैसे एक्सपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने क्या 15.5 सेफ हार्बर मार्जिन जो है ना एक्सपोर्ट्स के लिए, हाँ वो 5 इयर्स के लिए आगे उसको कंटिन्यू करेंगे उस तरीके से। तो ये इन्होंने परसेंटेज फिक्स कर दिया, तो उसको किस हिसाब से देते हैं आगे उसमें मालूम चलेगा इसको कि किस हिसाब से आगे उसको प्रेजेंट करेंगे, किस हिसाब से यूज करने देंगे, तो क्या पॉलिसी बनाएंगे उसके लिए। अभी तो हिंट तो दे दिया इन्होंने कि भी एक्सपोर्ट के लिए हम लोग आईटी सेक्टर का बढ़िया करने वाले हैं, और प्रेजेंटेशन जो रूल्स वगैरह है उस हिसाब से देंगे, वो देखने में मालूम चलेगा। मगर ये तो श्योर है कि आईटी सेक्टर को आगे ले जाने वाले आईटी सेक्टर ये 2-3 चीजें हैं। और मुझे उम्मीद थी, मतलब हल्का हल्का थोड़ा डाउट था, बट अच्छा हुआ कि लॉजिस्टिक्स पे बहुत सपोर्ट किया है। लॉजिस्टिक पे इन्होंने वाटर बेस बना दिया, Water कार्गो base बना बना दिया, कंटेनर लिस्ट बना दिया, वो सब एक तरह से करना ही था इनको। जरूरी था, वो बढ़िया गया वो चीज। बाकी ये जो और अभी ये जैसे कह रहा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक एआई टूल लेके AI आएंगे, tool एआई भारत विस्तार, विस्तार वो लेके आएंगे, तो एग्रीकल्चर को तो प्रोडक्शन करना ही है, तो उससे जैसे जैसे प्रोडक्शन करेगा तो एआई टूल उसकी और हेल्प करेगा उसके अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसको देखें कैसे अब कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा इसका। एग्जैक्टली। बाकी 2000 करोड़ सेल्फ रिलायंट फंड में और डाल दिया है, तो दैट्स गुड। बाकी कुछ ऐसा स्टार्टअप्स के लिए मेजरली नहीं निकाला ना कि मतलब जैसे सीड फंड की जो लिमिट थी अभी इंक्रीज होना बहुत जरूरी थी। नहीं ऐसा वो अभी सुनने में नहीं आया है ना, अभी फाइन पॉइंट देख के और पता चलेगा कि क्या क्या इन्होंने बट और अगर क्या क्योंकि लाया। अभी वो फंड अबाउट टू ओवर है कि वो खत्म होने ही वाला है सीड फंड का। vanishing। हाँ, तो अल्टीमेटली दैट मींस कि या तो स्कीम बंद हो रही है नहीं because- देयर वुड बी या तो सेम प्रोविजन होगा, हाँ। उसको बढ़ा दिया होगा, उसको ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज मुझे जितना सुनने में मिला है, आई वाज बिजी विद सम अदर पीपल, कि जहाँ पे टैक्स हॉलीडेज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए और ज्यादा दे दी अभी है ना,
टैक्स हॉलिडेज तो पहले ही हटा दिया इन्होंने। वो तो धीरे-धीरे कम ही करते जा रहे हैं। लोअर कम कर रहे हैं, कम मुझे लग कर रहा रहे है हैं। कि increase कर रहे हैं। नहीं लोअर टैक्स रिजीम ला दिया ना 22% नहीं, not for 15%। individuals, but जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के कुछ के लिए, हाँ, टैक्स हॉलिडेज, डेटा सेंटर्स हाँ, में टैक्स वो वो तो क्लाउड वाले के लिए भाई, हाँ। फॉरेन का आदमी यहाँ पे आके काम करेगा, यहाँ के आदमी को सर्विस देगा और यहीं पे अपना डेटा सेंटर करेगा, तो उसको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। भाई हमारे को टेक्नोलॉजी मिल रही है ना, हमारे को टेक्नोलॉजी मिल रही है। बट मुझे लगता है डेटा सेंटर्स अपने इंडियन के लिए टैक्स हॉलिडे देना बहुत जरूरी है। लोकल डेटा सेंटर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया नहीं है फॉरेन टेक्नीशियन और फॉरेन इंटेलेक्चुअल्स हु आर कमिंग टू इंडिया, तो उसके लिए 5-6 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन दिया है। अच्छा, हाँ, वो जो है ना वो टोल के थ्रू दिया है, वाला जो टोल स्कीम वाला है ना, एक उसको भी कहीं ना कहीं ऐड करा है, जो प्रोफेशनल आते हैं ना उसके लिए, उसको भी वहाँ पे ऐड ऑन करा है उन्होंने। अच्छा, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग ले, टोल मैन्युफैक्चरिंग जो कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, हाँ, टोल उनके का लिए पूरा tax system वो holiday भी है और वो भी अलग है। हाँ, दोनों अलग दिया है उसको। तो आपके अगर सपोज कीजिए कोई डॉक्टर बाहर बहुत बड़ा डॉक्टर है और या बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो बाहर रहा है आउट ऑफ इंडिया, इंडियन है जो बाहर एस्टैब्लिश हो गया, एंड यू वांट टू कम बैक टू इंडिया, तो उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन की इंडिया की इनकम के ऊपर टैक्स भी करा है कुछ। आई होप दैट्स है कुछ है, वी हैव टू और आल्सो टैक्स एग्जेम्पशन जो स्कीम है 2030 तक बढ़ा दी है। हाँ, 2030 तक बढ़ा दी, तो वो तो जो चल रही है अच्छी है। अच्छी है। अभी तो बहुत सारे बिजनेसेस, और उसमें पहले मेरे ख्याल से लिमिटेशंस थी कि स्पेसिफिकली कुछ इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, और अब मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी मिला है टैक्स एग्जेम्पशन। तो जो रियल एस्टेट फंड के थ्रू जाएगा टैक्स एग्जेम्पशन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, साथ में जो कंपनीज जो बिल्डिंग बनाती है, हाँ, क्रेन्स है, रियल एस्टेट वाली, रियल एस्टेट के अंदर या रोड बेस Capital ब्रिजेस goods है, है। कैपिटल गुड है, उसके अंदर भी एग्जेम्पशंस दिए, उसके लिए भी फंड्स दिए। उसको रीडिजाइन कराया उन्होंने। अभी क्या होता है कि कुछ उनका वेंडर्स हो जाता है, यूज नहीं कर पाता, कहीं फंस जाता है मामला, उनकी एसेट फंस जाती है, अब उसको यूज नहीं कर सकते वो लोग, तो उसको बोले कि हम लोग इसको सोचेंगे कि क्या करा जा सकता है। अब कोई एक बिल्डर ने काम करती है, जैसे आज रेरा के अंदर काम है, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे देते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज को सोच रही है, क्योंकि डेप्थ वाली एसेट्स हैं, जो फंसी हुई एसेट्स हैं रियल एस्टेट, उनको कैसे यूज करा सकते हाँ, हैं। वो था फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उसके लिए वो रिट्स लेके आएंगे। हाँ। और रिट्स के अंदर दैट कंपनी वुड बी वो वहाँ पे लिस्ट करेंगे और उस कंपनी से जो रेंटल आएगा वो रिट्स के थ्रू पेमेंट करेंगे, ताकि वो जो उनकी जैसे सपोज कीजिए आज बीएसएनएल के पास में खूब एसेट्स हैं, बिल्कुल एसेट्स खूब एसेट्स हैं। बीएसएनएल इस वक्त बहुत स्ट्रांग बिल्कुल, सही बात कंपनी है, उसके प्रॉफिट्स लॉस में एसेट्स बहुत ज्यादा है। अब उसके एसेट्स को मोनेटाइज करना है। ऐसे और भी गवर्नमेंट कंपनीज है, पीएसयू जिनके पास में बहुत बड़े-बड़े एसेट्स हैं, करना ही मेन सेंटर में, सिटी के सेंटर में लेके बैठी बट यूज नहीं आ रही, तो उसको रिट्स के थ्रू मेरे हिसाब से वही कुछ है, उसको हाँ, इस तरीके से नोट करना पड़ेगा और उसके रिट्स के थ्रू उसको अभी मैंने अभी दो तीन पॉइंट और ले रहा था जिन्होंने अपडेट्स आ रही हैं। हाँ। तो उसमें से एक तो चलो डीप टेक के लिए, बट उसके नीचे सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है वो कॉर्पोरेट मित्रास आ रहा है, जो हम बात कर रहे थे। वो एमएसएमई के लिए उन्हें बेनिफिशियल है कि भाई जो आईसीआई है और आईसीएसआई है उसको वो एक तरीके से कॉर्पोरेट मित्र बनाएंगे। अब वो कैसे, मतलब we have during our privilege discussion feel that pain कि बैंक होता है और एक एमएसएमई होता है। एमएसएमई बेचारा तो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिविजुअल आदमी होता है, बैंक अपनी जगह होता है। बैंक बोलता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, एमएसएमई बोलता है मैं कैसे तेरे को समझाऊं। हाँ। तो there is a requirement to have some person in the mediation जो इसको समझाए, उस लाइन पे लेके आए। वो बजट में तो लेके आए उसके तो बजट के अंदर ही उसको उन्होंने और सबसे पहले भी हमने वो सुनी during our preliminary discussion आप शायद आए थे, हमारा डिस्कशन हुआ तो ये बात हुई थी कि साहब ये कोई पेन है जो जिसको अपन वो बहुत अच्छा है। ये चीजें स्ट्रीमलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जो जितनी सारी बातें हम यहाँ पे अभी एक थोड़ा डिस्कशन और करते भी हैं, तो जो डिस्कशन वहां तक पहुंचना चाहिए कॉर्पोरेट मित्रास के थ्रू ही बेस्ट पहुंच पाएगा, बिकॉज़ जो टेक्निकल चीजें हैं वो एमएसएमई तक वहां पहुंचने के लिए वी नीड अ वेरी लार्जर स्कोप। वी आर डूइंग आवर बिट, बट वो एक क्या और होता है फॉर्मुलेस तरीका होगा। साहब क्या होता है प्राइवेट बैंक के अंदर उनकी पूरी फोर्स होती है जो उसको केस को सैंक्शन कराने में लगी रहती है, और पीएसयू के अंदर या तो डीएसए होते हैं और कोई होता नहीं। गवर्नमेंट के जो वो बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास में इतना स्किल अप नहीं होता बैंक के पीएसयू के एम्प्लॉयज के पास में कि उसको समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड एक तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन का जो गैप था ना वो उन्होंने फुलफिल करा है। उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने सीए और सीएस इंस्टीट्यूट को बोला है कि भैया आप ये MSME और आप जो है- कराएं इस काम को करा के आप आगे बढ़ें। एग्जैक्टली
That is very important. That is very important. एक And तरीके it was feeling कि आपका PSU बैंक की लैंडिंग नहीं बढ़ रही थी because of this only. Exactly. तो वो लैंडिंग अब इससे बढ़ेगी definitely. और जो बैंकिंग रिफॉर्म्स आएंगे उनके अंदर भी अब कहीं ना कहीं इससे लिंक करेंगे ये लोग वो प्रोफेशनल जुड़ी- वो जुड़ी ठीक है है पूरा। आपस में एक दो दिनों जो एक बजट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से exactly. वही एक जगह को प्लस करेंगे दूसरी जगह आगे आप होगा फिर दूसरे को करेंगे तो आगे बट मुझे एक चीज मतलब जो इस पूरी चेन में जैसे हम बोल रहे हैं कनेक्ट में एक चीज जो मिस पार्ट है जो शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो जैसे आपने जेम बोल रहा तो प्रोक्योरमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं दिया प्रोक्योरमेंट पिछले साल बहुत अच्छा हुआ है। शायद पिछली बार दी था इस बार उन्होंने पेमेंट्स में और सेटल में ज्यादा फोकस करा है अच्छा क्योंकि शिकायतें ये आ रही है कि भाई हमारे पेमेंट्स हो नहीं रहे रुक रहे हैं एक तरीके से वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाती है हमारा एक इनवॉइस ब्लॉक हो गया दो इनवॉइस ब्लॉक हो गए तो भाई इतने की कैपिटल रहती है और जब ब्लॉकेज आ जाता है तो गवर्नमेंट देखते हैं कुछ ना कुछ करना चाहिए इनिशिएटिव तो उनको बोला कि ठीक है अब हम लोग इनवॉइसिंग को भी यहाँ से आपका ट्रेस करेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली सॉर्टेड एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि बहुत मेजर है या थोड़ा ब्रेक No, लेके like डिस्कस close bit आपकी गवर्नमेंट का बजट फॉरवर्ड लुकिंग है। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में लिटिगेशंस कम करने की कोशिश करी वेरी इंपॉर्टेंट ईज ऑफ बिजनेस जो है हाँ। उसके ऊपर ध्यान दिया है जो कि मेजर प्रॉब्लम हाँ जो पंगे है मेजर प्रॉब्लम जो कि गवर्नमेंट के आदमियों से जो वो एमएसएमई डरता है। दूसरा जिससे सही बात। एफडीआई जो है एफडीआई डरते हैं मैं तो बहुत बड़ा प्लस जैसे आप हां बोलिए एफडीआई जो नेचुरली आती है तो दे आर फियरफुल कि हाँ। अब स्टेबिलिटी की इश्यूज है सो दे आर टेकिंग मनी बैक वो जो इशू है तो when the investor sees that yes there is a stability अब जैसे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना हाँ, बिल्कुल। इसमें से there is a stability if your debt is less than okay ratio is less you are reducing then there is a stability and then the confidence दूसरा जो जिस तरह का बजट आ रहा है वो फॉरवर्ड लुकिंग दिख रहा है। naturally फॉरवर्ड लुकिंग बजट को देखते हुए इन्वेस्टर्स को ओवरसीज मार्केट को ये लगता है कि हाई स्टेबल गवर्नमेंट है are the measures and which they are are thinking long term. They are thinking long term. measure ease of business के लिए बहुत measures लिए they are इससे trying to do इन्वेस्टमेंट it आते yes हैं और इससे हाँ, ठीक हो गया। अभी इसमें अपन देखेंगे तो इन्होंने जो बेस लेवल है ग्राउंड लेवल है जैसे टियर 1 टियर 2 टियर 3 जो लोएस्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट भाई ठीक है हमने आपको वाले साइड को तो कॉपी दे दिया इस बार हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं उनको भी कुछ देना स्टार्ट करते हैं जैसे यूथ के लिए इन्होंने ट्रिपल ई का नारा दिया एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो एक उन्होंने कुछ अलग सोच के दिया है कि भाई ठीक है यूथ को तैयार करो जगह जगह पे जो सिटी है जो लोअर ग्राउंड है उसको तैयार करो वो एक अच्छा लगा इसके अंदर और हेल्थ सेक्टर पे तो मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग भी ठीक बहुत है जरूरी है मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत जरूरी है बाहर बहुत हाई कॉस्टली है tourism कर रहे हैं, मतलब एनआरआईज जो हैं Animal production में कर रहे हैं, इनको जानते agriculture हैं में कि कर दांत रहे में हैं, दर्द होता है वो coconut यूएस में production में करते हैं इंडिया में भी ठीक कराते हैं। एंड ठीक सर कराते मैं हैं। इसके लिए जेन्युइन आपको एक चीज बताऊंगा ये प्रैक्टिकल केस है वो अगर इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर द स्टार्टअप्स एज वेल बिकॉज़ वी हैव मेट विद मेनी स्टार्टअप बहुत बिजनेसेस से अपनी बात हुई है ये प्रैक्टिकल बिजनेस भी है इंडिया में नहीं है अगर मैं फॉरेन क्लाइंट लेकर आता हूँ लेट्स से अगर उसका $1,000 या $5,000 का बिल बनता है तो उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड 25 से 30% मेरी कमीशन है। हाँ, हाँ। वो कोई भी बैंक मैं कोई भी हॉस्पिटल में जाके बात बोल सकता हूँ अपोलो में जा सकता हूँ फोर्टिस में जा सकता हूँ बोल सकता हूँ मेरे पास एक इंटरनेशनल क्लाइंट है पेशेंट है अगर आप सर्व करना चाहते हो तो उसके बिल के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड 25-30% फ्लैट वो कमीशन दे रहे हैं तो मतलब ये इतना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी बहुत है अपॉर्चुनिटी है ही प्रेडिक्टर के लिए तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है चीजों की ये जो हमारा ये अपॉर्चुनिटी मतलब medical tourism वाला एक अच्छा काम है कि- increasing the cost of the foreign medical tourism उसकी cost they are coming here to reduce the cost if you are हमको भी increasing मालूम है। it नहीं, वो नहीं, cost नहीं, कम आप ही वो रहेगी। समझिए उनके विदेश की कॉस्ट से इंडिया में कॉस्ट That I कम do पहला agree. पॉइंट That I agree. पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे जो प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है वो विदेश में नहीं मिल पा रही पर्सनल अटेंडेंस अवेलेबिलिटी जो है हाँ, वो नहीं availability नहीं बस तो इसलिए इंडिया को प्रेफर क्रिटिकल बीमारी होगी तो वो वहीं करेगा क्रिटिकल को ज्यादा हो जैसे नॉर्मल है Dental- दांत ही ठीक कराना है आंखों का कुछ इलाज कराना है Minor और जिन्हें इससे- कहते हैं इसके अपन minor related आपको working। करानी कुछ भी चीजें वो सब इंडिया में आके कराते हैं वो पोस्ट केयर भी अच्छा है अपने यहाँ का हाँ वहाँ से अच्छा यहाँ पर है पोस्ट केयर जो चीज है ना Post care भाई अच्छी ठीक है है। आपने ट्रीटमेंट कराया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप उन्होंने सारी सर्विसेज दी आपको और और- पोस्ट केयर का जो फैसिलिटी है ना वो अच्छा बताते हैं अपने यहाँ पे regarding this commission, I also मेरे साथ होता नहीं होगा on a public platform
नहीं एग्जैक्टली मैं आपको स्टार्टअप का डीलिंग में दिस पड़ेगा बिकॉज़ चलिए ठीक है आगे रैप अप करते हैं हाँ ठीक है हम इफ पॉसिबल सर आप अगर आप ब्रेक ले लेते हैं वी हैव टू लंच एज वेल एंड या एक काम करते हैं हम 10 मिनट का एक रैप अप एक कंप्लीट सेशन ले लेते हैं फॉर द ऑडियंस जो ऑडियंस ऑनलाइन कनेक्टेड है ठीक है हमने इंटरनेट जो 10 पॉइंट की 10 डिस्कस करते हैं लेते हैं something online questions and everything. There are some people who are looking for some questions and they are throwing it to your channel. तो वही मैं बोल रहा हूं कि हम बैठ जाते हैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं देन हां बिल्कुल Thank you so much for coming. Thank you, sir. Kanika, how are you? I'm good. Thank you so much for coming. It's okay. And please. चाय I like coffee. पूछ बैठे चालू रहने दो बंद हो गया पॉज हो गया पॉज नहीं होगा ना नहीं हो रहा घंटा भर लगेगा खाने के लिए उनको बोलो नहीं घंटा भर नहीं होती है तूने कर दिया क्या वेट नॉट बंद नहीं करना ना घंटे भर में आएगा इसे पूछ वीडियो में चाहिए इसका URL लो ठीक है उसको क्या बोलते हैं ब्राउज़र की एक नई स्क्रीन बना दो और है ना उसको लाइव कर दो स्क्रीन चेंज कर दो उसकी इसको हटा दो मतलब इसकी स्क्रीन को पॉज करके और ये चेंज कर दो ठीक है ये जो लाइव चल रहा है ना इसको वापस ये लाइव कर दो To establish dedicated rare earth corridors to promote mining. Also reduced BCD of 2 other such minerals to provide क्यों ये पॉज कर दिया सब हो गया यहाँ से क्लोज करें ब्राउज़र उनको बुलाओ के साथ एक सेशन है लंच आप कर नहीं अरे आएगा हो गई स्टॉप हो गई चाय बोलना चाय कॉफी यहीं पे तो है इन्वेस्टमेंट्स आपकी सारी यहीं पे है पीछे पड़ चल जाओ दोनों इसके पास है गौरव के पास वो अडेप्टर भाई लाइव बंद कर दिया अब तुम फटाफट लॉग इन करो दूसरा जगह चार्जर वो उधर धीरज लेके बैठा है कंटिन्यू हो रहा ये रहा हमारा चार्जर ये उधर से बंद कर दिया अरे चार्जिंग आवाज आ रही है हाँ बीबी आ रही है थोड़ा डिले था वापस चेक करेंगे हेलो हेलो पता नहीं कितना क्या बोल रहे हो चार्जर पे करा कुछ भाई जल्दी वो कर दो विशाल भैया उनके आईफोन के चार्जर हाँ बता सुनो आईफोन वाले चार्जर को कुछ करो उनके हैं मुझे याद है बोल रहे थे वो
अब उनकी मुख्य बोलते काम नहीं कर रही, तो कुछ तो करो। बोले पावर बैंक है तो पावर बैंक मंगाओगी।